So this is the question number 33 from CBSE sample paper midterm 2021, and this question comes under the topic file handling in Python. So in this particular question, a binary file has been given to you which is named as employee.dat along which से कुछ data given है आपको. Along with this binary file आपको क्या given है, एक code given है, and it has been asked कि whenever you call this function, जो भी mentioned function है जिसका नाम क्या है display, whenever you call this function display with the argument 103, जब भी ये फंक्शन आपने एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आउटपुट क्या आ रहा है आपका 1,90,000. नाउ यू नीड टू टेल आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शंस विच वन विल बी द करेक्ट वन टू गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट. तो लाइन वन के अंदर हम क्या स्टेटमेंट यूज करें इन चारों ऑप्शन में से so that we will get the required output. So for your convenience, what I have done, we have taken the data here so that we will be able to visualize data more clearly. Okay, if you see the data, what we required data is 1,90,000. Okay, so in order to get 1,90,000, so required data is 1,90,000. So in order to get 1,90,000, what we need to do, we need to skip this one. If you sum the salary of other employees, you will see 50, 40, 60 and 40. It will sum up to 1,90,000. If we want to skip this one, what we need to do, we will see कि अगर employee number क्या है 103, तो what we want to do, we want to skip this value. Okay, now coming to the code, तो first क्या हो रहा है, function क्या है आपका header है. Then second line के अंदर क्या कर रहा है, you have opened the file dat in the read mode. Then what you have done, you have taken a variable which is named as totsum and its initial value is 0. Then you use try and accept. Try and accept क्लोज काम कैसे करता है, इन केस अगर ट्राई के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है इसमें से किसी भी स्टेटमेंट अगर आपको रन टाइम एरर देती है तो सिचुएशन में क्या होगा, इट विल एक्सिक्यूट एक्सेप्ट क्लॉज. इट इज मोर लाइक इफ एल्स. इफ के अंदर अगर आप कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इट विल एक्सिक्यूट एल्स. सिमिलरली ट्राई के अंदर अगर कोई भी स्टेटमेंट आपको रन टाइम एरर दे रही है तो इन दैट सिचुएशन इट विल एक्सिक्यूट एक्सेप्ट क्लॉज. ओके, नाउ सो कमिंग टू द कोड, इट इज आस्किंग व्हाइल ट्रू. आपने अगर आप हर केस में क्या कर रहे हो, आप आर लोड कर रहे हो, आर इन द सेंस यू आर लोडिंग ईच एंड एवरी रो. इफ यू आर सेइंग इफ आर जीरो इक्वल्स टू एम्प्लॉय नंबर, तो व्हाट वी वांट कि जो हमारा एम्प्लॉय नंबर 103 है उसको क्या किस में क्या करना है, हमको स्किप करना है. स्किप का मतलब वी विल नॉट एक्सिक्यूट द रेस्ट नेक्स्ट लाइन. अब क्या करना है हमें, अगर हमारा एम्प्लॉय नंबर नहीं होगा तो उस केस में क्या करने का, वी नीड टू ऐड दोज वैल्यू. There is a small problem with this program. It should be else here. It might be the misprinting. Okay, तो यहाँ पे क्या आएगा, else आएगा, because what we are saying कि अगर employee number के बराबर है यानी 103 के बराबर है तो we don't want to do anything with that particular value. अगर नहीं तो क्या करना चाहते हैं, we want to add rest of the salaries. Okay, so for this one option number C is correct, but still I will say कि जो else condition की वजह से कोड हमारा गलत है. अगर पेपर में क्वेश्चन आपके कुछ ऐसा आता है तो इफ यू अटेम्प्ट इट यू विल गेट फुल मार्क्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने कौन सा ऑप्शन पिक किया है. ओके, आई होप इट हेल्प्स. यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू टुडे. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस वन, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स. ओके गाइस, देन दैट्स इट फॉर द डे. थैंक यू फॉर योर टाइम.